Hello, Namaskar, and welcome to the CAA Show. CAA, as all of you know, is Conversations and Analysis, and my name is Juggi Bhasin. तो जैसे हम सब जानते हैं कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो एक अपनी चरम सीमा पर आ चुकी हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ political activity which is going on today. For instance, we know there's a change of guard which has happened in Haryana. तो ये सब न्यूज़ तो विच इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, चुनाव के टाइम ये सारी न्यूज़ आनी आती रहती है. लेकिन साथ साथ, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, there's a lot of defense news which is also coming in. And this news is coming in not in trickles, but it is coming in almost in a flood. Every day there are new defense updates, either from the government or from other sources. And there's also very interesting geostrategic defense news which is coming in practically from all sides. जैसे आज ही देखते हैं आज क्या हुआ है. आज फॉर इंस्टेंस यू नो दैट आज पोखरन के अंदर बहुत ही एक मैसिव एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने करी है. दिस इज अ जॉइंट आर्मी एयरफोर्स एक्सरसाइज on a very massive scale. And unfortunately, in this exercise, one of our aircraft, that is a Tejas aircraft, crashed. The pilot is safe though. And in these kind of intense, massive exercises, these kind of mishaps or accidents can happen. तो ये एक्सरसाइज आज पोखरन में हुई. अभी कुछ ही दिन पहले मालदीव्स के अंदर हमको न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ म्यूजू साहब जो हैं उन्होंने अब टर्किश ड्रोन्स लेने का इरादा बना लिया है. Of all the places, Turkey, which is a little antagonistic towards India. Then, 2 days back, हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सेला टनल की इनॉग्रेशन करी अरुणाचल प्रदेश में. द सेला टनल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टनल. तो ये न्यूज़ भी आ रही थी. वी ऑल्सो नो दैट सम टाइम बैक वी हैव एक्सपोर्टेड द ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस. तो ये अलग अलग defense news, alag from different sectors, from different parts of the country, from different parts of the globe, actually, if you think about it. Defense news is coming in every day. And then the mother of all defense news, that is the testing of the Agni 5 MIRV technology. इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि that now we have the capability to send an ICBM capable rocket, which is capable of splitting up into 8 to 10 different warheads. Some of these could be actual warheads, some of these could be decoy warheads. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कैपेबिलिटी है, ये भी हमने अक्वायर कर ली है. तो इसके बारे में काफ़ी सुर्खियों में ये न्यूज़ रही है अबाउट दिस MIRV Agni 5 launch. And then there was another news sometime back that 10,000 Indian troops have moved to the China border. यानी कि जो मैंने आपको पहली बात जो बताई कि काफ़ी डिफेंस न्यूज़ आ रही है. एंड इट मेक्स यू वंडर what really is going on. And I'm going to talk about this particular aspect कि क्या ये coincidence है? Is this purely a matter of chance कि इतनी डिफेंस न्यूज़ आ रही है? बिकॉज पिछले इलेक्शन भी हम जानते हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं. पिछले इलेक्शन में तो ऑफ कोर्स पुलवामा हुआ था, वी ऑल नो दैट, विच हैड अ मेजर बेयरिंग ऑन द इलेक्शंस. बट उसके अलावा कोई और ऐसी कोई डिफेंस न्यूज़ इतनी नहीं थी. बट इस बार ही बहुत डिफेंस न्यूज़ आ रही है. एंड आई ऑल्सो, बिफोर आई फॉरगेट, द रजौरी encounters which had some time back also taken place. So that was also in the news. So बहुत सारी defense news आ रही है. And the question which I'm posing in this particular episode is this all a coincidence or is this pointing to something else which is going on? We are going to discuss that. But before I discuss that, I want you to look at your screen closely. You see that red button on your screen. Press that button and you become a subscriber. Subscription is of course free of charge. You all know that the perspectives which I bring in the CAA show is a little different from the normal podcast which you either see or hear or both. And so therefore join our podcast, talk about this, share this video with your friends. We would of course like to get more and more subscribers. So, well, that was my pitch. ये pitch मेरी अब खत्म हो चुकी है. So let's come back to the topic of the day. क्या हो रहा है? What is happening? Is there something interesting? There is something different which is going on which we should be aware.
एज यूजुअल मैं कॉशनरी नोट पहले करना चाहूँगा कि कोई ऐसी न्यूज़ फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं आई कि देर इज समथिंग मेजर विच इज़ इन दी ऑफिंग, समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन विच विल स्टार्टल एवरीवन। अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। जो मैं आपको अपना एनालिसिस देने वाला हूँ अब, दैट इज बेस्ड partly on because I think I'm very good at connecting the dots, but also because I have talked to a few friends who are in the know of such things. So my analysis is based on piecing together a scenario which is unfolding, I think, especially on the international front. And I think we have to be a little careful of what is happening in our external environment as we head very, very close to elections. तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब what could be going on कि इतनी डिफेंस न्यूज ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम ऑल साइड्स हमको सुनने को मिल रही है। There is now a perception which is gaining ground that something big could be in the offing before the next government takes over. यानी कि कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कई ऐसे फोर्सेस हैं, इनमिकल फोर्सेस, एनिमी फोर्सेस आप उनको कह सकते हैं, which would want to create a problem for the country so that the entire focus, हमारे इस टाइम जो फोकस है वो ऑब्वियसली होना चाहिए कि अब नई सरकार कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी, जो पूरा इलेक्ट्रल प्रोसेस है उस पर होनी चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा ध्यान एक डिफेंस मैटर, एक डिफेंस इंसिडेंट पर चला जाए, where the entire focus is on that particular incident, and therefore the present dispensation is seen to be in a very negative light. अब ये इंसिडेंट क्या हो सकता है इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, बट माई सोर्सेज आर टेलिंग मी दैट सरकार में कई लोग थोड़े वरिड हैं इस समय। दे आर वरिड एंड राइटली सो बिकॉज द एक्सटर्नल environment is very, very tricky at the moment. तो इसके बारे में आज बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले इलेक्शंस में पुलवामा हुआ था, विच हैड अ मेजर बेयरिंग ऑन द इलेक्शन। What these sources are telling me is that there could be an inverse of पुलवामा, यानी कि एक तरह का मैन्युफैक्चर्ड एक्सटर्नल इंसिडेंट हो सकता है विच इज केपेबल ऑफ ड्रैगिंग इंडिया इन अ क्वागमायर। क्वागमायर होता है कि जैसे कि आप किसी, जिसे कहते हैं आप दलदल में फंस जाते हैं, तो एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, ऐसा इंसिडेंट ऑर्केस्ट्रेट हो सकता है, ऐसा इंसिडेंट कंट्राइव कराया जा सकता है, हो सकता है इट माइट एक्सप्लोड इन फ्रंट ऑफ अस, जिसमें से बाहर निकलना, उसको सुलझाना, बड़ी जल्दी निपटाना इतना आसान नहीं होगा। द गवर्नमेंट इज aware of this possibility, and that is why there is this almost frenetic, जैसे कहते हैं कि हम पूरी अपनी जो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इस टाइम हम शोकेस कर रहे हैं। व्हाट आर वी शोकेसिंग फॉर? नॉट दैट पीपल एडमायर अस और दैट इंडिया इज अ ग्रेट मिलिट्री पावर, बट दैट people fear us and they think 10 times before taking a precipitous step which can create or vitiate the security environment. यानी कि इस समय जो ये पोखरण की आज एक्सरसाइज हो रही है और जो हमने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जो हमारे डिफेंस अपडेट्स आ रहे हैं ऑन द काइंड ऑफ आत्मनिर्भर कैपेबिलिटीज वी आर एक्वायरिंग, एंड स्पेशली जो अग्नि 5 का जो लॉन्च हुआ है विद MIRV कैपेबिलिटी, जो मैंने आपको अभी समझाया, which is capable of 8 to 10 nuclear warheads, either decoys or real ones, hitting simultaneously over different trajectories, different speeds and different targets. तो ये एक तरह की एक वार्निंग इंडिया दे रहा है कि वो जो फोर्सेस को वार्निंग दे रहा है कि कॉशन, बी केयरफुल, इफ यू लॉन्च, इफ यू डू समथिंग, वी विल रिस्पॉन्ड इन जिसे कहते हैं कि मतलब एक विद टोटल स्ट्रेंथ, वी विल नॉट होल्ड बैक। तो ये एक तरह की वार्निंग इंडिया दे रहा है बिकॉज इंडिया इज अ लिटिल स्केप्टिकल राइट नाउ। देयर आर फोर्सेस आउट देयर who can muddy the waters, who can create problems for India. They are looking for an opportunity because इस time जो है everybody's focus is on चुनाव के ऊपर है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी होगी, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी, किस प्रकार से वो गवर्नमेंट बनेगी, पूरी इलेक्शनियरिंग पे है, इलेक्शन प्रोसेस पे है। तो एडवांटेज लेके कुछ एक्सटर्नल जो ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, दे माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो दैट्स व्हाई
suddenly the government is very, very sharp. It's very, very keyed in. And that is why it is now literally on a daily basis sending a warning. It's like a warning to these forces, be careful, don't try and think stupid because we will respond brutally if necessary. और अग्नि 5 का जो टेस्ट है इज टेस्टमेंट टू दैट, विच मीन्स अग्नि 5 का थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा, देन वी विल आई एक्सपैंड ऑन दिस थ्योरी विच आई एम टॉकिंग अबाउट. अग्नि 5 की जो रेंज अभी जो एक्चुअल टेस्ट हुआ है दैट इज अराउंड 3500. कैपेबिलिटी उसकी ऑफिशियली बताई जा रही है 6000 किलोमीटर है. बट इंडिया हैज़ अ पॉलिसी दैट वी डोंट एग्जैक्टली टेल कि हमारी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी कंप्लीट रेंज कितनी है. हमने ऐसा कभी ठीक तरह से कभी ये वी डोंट मेक दिस इंफॉर्मेशन ऑफिशियल. एंड देर आर पीपल नाउ इन द नो हु आर सेइंग कि ये जो अपनी 5 जो MIRV कैपेबिलिटी वाला है, दिस हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अबव 8000 किलोमीटर्स, विच मीन्स इट्स एन ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. और जैसे हम सब जानते हैं इट इज ट्रैवलिंग एट एन इंटेंसली फास्ट स्पीड, many times the speed of sound. It has its devastating capabilities, small nuclear heads. यानी कि assuming, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ theoretical, सपोजिंग चाइना पे लॉन्च होता है तो चाइना पे एक ही टाइम में जो मिसाइल जो है इट विल हिट बीजिंग, इट विल हिट शंघाई, इट विल हिट 5, 6, 7, 8, 10 different places in China, which means that one missile is capable of utter devastation. और आप सोचिए अगर आपके पास पूरा आर्सेनल है अग्नि 5 मिसाइल्स का, तो वो किस तरह को वो ध्वस्त कर सकता है, जो आपकी जो एनिमी जो आपकी शक्ति है उसको किस तरह से एक मिसाइल किस तरह से ध्वस्त कर सकती है, और आर्सेनल तो क्या हाल करेगा. तो the capability is there, the capability is there, we have showcased our capability. I'm going to talk a little later about intent. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे पहले यह समझना जरूरी होगा कि कौन सी ये ताकतें हैं, which are these forces that India has suddenly stepped it up and they are sending. It's almost like a cloak and dagger warning which is going on. It is not a warning which is openly being given to the countries are not being named, but everybody knows, or rather if the message is being sent to these countries that beware, be careful, don't do anything stupid, otherwise we will take any step to protect our sovereignty. और why am I saying that? देखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है. इट्स ऑल्सो वेरी इनसिक्योर टाइम. चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, जितना भी पॉपुलर हो, अगर सपोजिंग कल कोई डिफेंस सेक्टर में कोई अटैक होता है, सपोजिंग आपके किसी एक इंस्टॉलेशन पर अटैक होता है, आपके जो सेंटर्स हैं, जो आपके डिफेंस सेंटर्स हैं, या आपकी सिविल पॉपुलेशन सिटीज़ हैं, या आपके जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उस पर सपोजिंग कोई अटैक होता है, तो पॉपुलर से पॉपुलर हेड ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बिकम अनपॉपुलर इन अ डे if that person, he or she, does not respond properly to the attack, and that is the danger. और हमारी सरकार इस चीज़ को समझती है कि कोई हरकत ना हो जाए जिस पर रिस्पॉन्ड करना दुविधा में हमें डाल सकता है, बिकॉज दैट कुड मीन दैट द इंटायर हार्ड वर्क ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स गोज डाउन द ड्रेन लिटरली इन अ डे. Supposing, just to give you an example, supposing there is a Galwan 2 kind of incident on a larger scale, तो सोचने की बात यह है कि उस टाइम आपका ध्यान इलेक्शनियरिंग पे जाएगा या उस टाइम आपका ध्यान उस इंसिडेंट पे जाएगा. पूरा का पूरा देश का जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा उस इंसिडेंट के ऊपर, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट. यू डोंट वांट एन इनवर्स ऑफ पुलवामा where the incident becomes the talking point, the discussing point in the drawing rooms of the ordinary Indian, and the focus is taken away from the policies, from the electioneering, and from all the other things which happen during the election process. तो इसलिए सरकार जो है इस पे सचेत है. They at the moment are very sensitive to this particular issue, and that is why all these tests which are occurring right now, all these exercises, military exercises which are going on, all the shifting of troops to the northern border, for instance, the setting up of the base, the naval base in the Minicoy Islands,
आई थिंक जटाया उसको कहते हैं. तो all these are pointers, all these are signals to all the hostile forces. Be careful. We are in harness, we are ready, and if you do anything, we will respond in kind or even more than that. अब बात करते हैं कि ये फोर्सेस कौन सी हैं जो कि हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं. Obviously, without saying, two forces, obviously, as we know, are China and Pakistan right now. और एक बड़ी interesting development जो हो रही है. Pakistan, we all know right now is, at the moment at least, it is a failed country. It is really going down on all parameters. And the common thing which they have right now with China is that China is on the downward slide. It is going down, almost looking like a failed economy. फेल नहीं हुई है, अभी भी बड़ी पावरफुल कंट्री है. इट्स अ वेरी पावरफुल मिलिट्री फोर्स, स्पेशली वेरी पावरफुल नेवी, एसेट्स बहुत हैं, इकोनॉमिक क्लाउड अभी भी बहुत है, बट इट इज़ फास्ट गोइंग डाउन. अब चाइना के अंदर क्या हो रहा है? चाइना के अंदर हम सब जानते हैं दी रियल एस्टेट मार्केट हैज़ क्रैश्ड बैडली. पॉपुलेशन उनकी, इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन. और चाइना का सब जानते हैं कि वो धमकियां ज़्यादा देते हैं. एक्चुअल चीज़ें जो हैं, एक्चुअल वॉरफेयर में वो कुछ खास नहीं कर सकते. लास्ट उन्होंने वॉर लड़ी थी वियतनाम के साथ, उसमें वियतनामी स्मॉलिश कंट्री ने उनको काफ़ी, उनकी जैसे कहते हैं, पिटाई करी थी उनके ट्रूप्स की. द इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज ऑफ चाइना आर नॉट गुड. पीपल आर पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना. तो हालत ख़राब है. और ऊपर से जो उनके मुखिया हैं, जो उनके हेड हैं, जो जिनके बारे में हम सब जानते हैं, he is hell-bent upon creating animosity with all kinds of neighbors, not only with India, but even, let's say, in the South China Sea. कोई दिन नहीं ज़्यादा जब उनके, जैसे कहते हैं, चाइना के पंगे फिलीपींस के साथ नहीं हो रहे या जापान के साथ नहीं हो रहे, with all these other countries. So China is a country which has lost its, what you call, its mojo. It's fast going down both on the economic parameters, and therefore, as they say, कि कोई भी, whether it's a human being, whether it is a powerful person, or whether it is a nation state, or it is people, anybody who starts going down and becomes bitter about their downfall, that person or that entity or that country is a dangerous country. और वही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी हो रही है. पाकिस्तान तो खैर, जैसे कहते हैं, पूरा का पूरा बैंड बजा हुआ है इस समय on every possible parameter. The only thing which is a little bit thriving is the army, जो उनकी आर्मी है, क्योंकि वो सारे जो रिसोर्सेज है आर्मी सब कर लेती है. तो लोगों के पास ना खाने को ना पीने को, मतलब वो तो सब जानते हैं हम, चाहे जो पाकिस्तान का हाल है. बट अगेन, अ फेलिंग कंट्री इज ऑल्सो अ डेंजरस कंट्री. एंड राइट नाउ दीज आर टू डेंजरस कंट्रीज. बोथ ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर्स, एंड देयरफॉर द डेंजर फॉर अस इज डबल. देयरफॉर सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल आउट देयर. एक थर्ड एंटिटी है जिसके बारे में वी आर बीइंग वेरी केजी राइट नाउ. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल without taking any specific names, but these are a certain group of Western countries, especially जहाँ पर आपके लेफ्ट लिबरल लीनिंग वाले लोग पावर में हैं. These countries are also not happy with India, और India senses the problem. और जैसे हम जानते हैं कि इन लोगों ने इंटरनली हमारे कंट्री के ऊपर, अभी एक्सटर्नल तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंटरनली बहुत कुछ ट्राई करा है. एंड दे बीन ट्राइंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, इंडिया में जो मतलब है जेंडर इम्बैलेंस है, इन्वायरमेंटली वी आर कम्प्लीटली स्क्रूड. तो दे हैव बीन गोइंग ऑन एंड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स. देन they stepped it up by by playing the Khalistan card. That is, और हम सब जानते हैं कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे लिए क्रिएट काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम. इट ballooned up into a fairly big problem. And then recently the farmers protest. Now all indications are that it was funded from abroad, especially from UK and from Canada. तो वहाँ पर भी हमने काउंटर मेजर्स लिए हैं. As we all know that we have now pressurized, we have linked the free trade agreement with UK, that you first take action against these Khalistanis. You cancel. We are going ahead with cancelling a number of these OCI cards and passports of the Khalistanis. तो हम उसके काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, हम उसके स्टेप्स ले रहे हैं.
कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक ब्लॉक जो है लेफ्ट लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज का ब्लॉक इज अनदर थर्ड एंटिटी विच इज हॉस्टाइल टू इंडिया इन अ स्ट्रेंज वे देयरफॉर ये जो तीन एंटिटीज की मैंने बात करी है चाइना पाकिस्तान एंड द लेफ्ट लिबरल वेस्टर्न ब्लॉक दे एक्चुअली हैव नथिंग मच इन कॉमन विद ईच अदर but they are all united in one thing that they are all completely opposed to the rise of India at the present moment and especially our head of state they don't like the man who is leading us at the moment we all know about that और उसकी मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वजह क्या है व्हाट इज द रियल रीजन व्हाई these three entities are completely opposed to this particular person and to India as a whole देखिए इन तीनों कंट्रीज का इंटरेस्ट यह है दैट इंडिया रिमेन्स काइंड ऑफ अंडर डेवलप्ड इट रिमेन्स अंडर कॉन्फिडेंट इट डज नॉट अपीयर ऑन द वर्ल्ड स्टेज और सबसे बड़ी बात कि इंडिया आत्मनिर्भर ना हो दे डोंट माइंड दे इनफैक्ट दे वुड वांट कि आप जो है आर्म्स जो है उन वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि हम वो हमको एक्सपोर्ट करें और हम उनसे इंपोर्ट करते रहें दे वांट दैट ओल्ड सिस्टम कि आप जितनी आप अपनी आर्म सप्लाईज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से लीजिए दे डोंट लाइक दिस आत्मनिर्भरता विच मीन्स दैट देयर एक्सपोर्ट्स आर गेटिंग स्क्वॉश हमने बल्कि अपने अपने आर्म्स अब एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं सो दैट इज अनदर फैक्टर विच इज अ बिग फैक्टर So, if you think about it, the key issue to my mind is Atmanirbharta that ever since a country has started on the path of self-reliance, whether it's on the economic front, whether it is on the military front, these countries are having a huge problem with us. They want to go back to the old status quo system, jahan par, as I said, underdeveloped, we were underconfident, we were complete importers of all kinds of things, इंक्लूडिंग आर्म्स वी वर और आप जानते ही हैं कि जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर्म्स होता है तो वहाँ तो धांधलेबाजी होती है सो दे वर कट्स एंड कमीशंस एक्सेट्रा इन्वॉल्व्ड इन ऑल दैट so they want to go back to the old system so that's another big reason why they are completely against the present dispensation in India और मैं अपना सी ये शो जैसे आपने नोटिस करा होगा मैं पॉलिटिक्स पे इतनी बात नहीं करता आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन दैट पॉलिटिक्स तो चलते रहते हैं बट द फैक्ट इज लेट्स बी वेरी क्लियर वी आर राइट नाउ objectively a rising power we are in a very good stable position we have a certain now we are no world table is complete without India sitting at the world table तो ये सब हो रहा है मगर कई कंट्रीज दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस फैक्टर सो जो हम कहते हैं ऑपोजिशन कहां से आ रही है हमें समझना पड़ेगा ऑपोजिशन इन तीन क्वार्टर्स से आ रही है चाइना पाकिस्तान एंड दिस ब्लॉक ऑफ लेफ्ट लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज अब सरकार के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है सरकार के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ ही हफ्ते रह गए हैं नई सरकार को चुनने में और आने में और इन हफ्तों के अंदर कोई भी मेजर बड़ा इंसिडेंट हो सकता है दे एक्चुअली वाई सोर्सेज आर टेलिंग मी दे आर एक्चुअली फियरिंग दैट इसीलिए डिफेंस पे इतना ज़्यादा तवज्जो इस समय दिया जा रहा है वी आर सेंडिंग अ मैसेज अगेन एंड अगेन डोंट ट्राई एनीथिंग स्टूपिड we will respond ferociously if the need arises to that because any prime minister right now or any head of state right now अगर ये situation होगी कि अगर कुछ डिफेंस में गड़बड़ हो जाती है और if you can't handle it that person is gone so we have to remember what is at stake here ये बड़ा important है अब बात करते हैं फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है कि आपने आपने बात कर ली आपने स्टेटमेंट्स दे दिए आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करा दी आपने डिफेंस परचेजेस कर लिए आपने अपने इंडिजिनस वेपन्स रोल आउट कर लिए ऑल दैट इज़ वेरी वेरी फाइन बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड रियलिटी यानी कि जब व्हेन इट कम्स टू द रियल थिंग कल सपोजिंग कुछ होता है तो कैन वी एक्चुअली राइज टू द ओकेजन एंड रिस्पॉन्ड बैक और उसके लिए द गुड न्यूज इज आई थिंक द टाइम अब ये एक टाइम आ गया है वेयर
initially जब as far as China was especially concerned, we used to be reluctant. 10-15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो हम रिट्रीट कर लेते थे. कुछ लैंड अगर वो जैसे कहते हैं ग्रेजिंग लैंड में अगर वो लोग इंक्रोच करते थे तो हम उसको बॉदर नहीं करते थे, हम उसको इग्नोर यूज्ड टू लुक द अदर वे. उन्होंने फ्यू 100 kilometers गेन कर लिया तो वी यूज्ड टू इग्नोर इट. No longer. That is no longer after Galwan. That is no longer the case. We are responding. और अगर आप गलवान के इंसिडेंट पे मैं आप सब पूरे I won't go into the entire history of the Galwan conflict. But उसके बाद आपको याद होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि जब फोर्सेस वर देयर ऑन द लेक, ऑन द सैंगपो लेक, तो हमने एक माउंटेन जो एक्चुअली हमारी विसिनिटी में आता है, हमारे एरिया में ही आता है, उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया था. बट we were directly overlooking one of the main Chinese garrisons. Once we were on the top of that peak, China बहुत घबरा गया था उससे. And therefore, after a lot of negotiations, forces withdrew from all sides in that particular sector. But we showed intent. हमने intent show करा. We occupied those commanding heights. It is called the commanding heights, जहाँ से we had a full overview of the Chinese garrison. तो हमने इंटेंट शो करा वहां पर. एंड नाउ रिसेंटली वी हैव बीन शोइंग इंटेंट इन द रेड सी एरिया. अब आप देखें, कमाल की बात यह है, इट्स नॉट इवन 1 or 2 or 3. देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स वेयर द इंडियन नेवी warships and frigates, they have reached before any other naval vessel of the world to help ships which have either been attacked by pirates or which have been bombed by the drones from the Houthis from Yemen. We have been helping those people. We have also been taking action against the pirates. अब कोई हमें डिक्टेट तो है नहीं, कोई यूनाइटेड नेशंस ने कोई हमको दिए मैंडेट तो दिया नहीं, वो हम अपने आप कर रहे हैं. बिकॉज वी फील दिस इज आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज आवर एरिया. हमें ये सी लेन्स को ओपन रखना है, प्रोटेक्ट करना है. बिकॉज हमारा जो ऑयल है, हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, कहीं इस एरिया से पास करती हैं. And therefore we are patrolling these areas and therefore we have shown intent. ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. मतलब पहले vis-a-vis स्पेशली चाइना, पाकिस्तान के अगेंस्ट वी हैव ऑलवेज शोन इंटेंट, बट vis-a-vis चाइना हम थोड़ा विड्रॉ कर जाते थे. नो लॉन्गर दैट इज द केस. वी नो एग्जैक्टली द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइनीज एंड वी आर नाउ मीटिंग देम आई टू आई. और ये जो 10,000 ट्रूप्स जो चाइना बॉर्डर पे गए हैं, नाउ वी आर मैचिंग देम मैन टू मैन, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट ऑन द चाइना बॉर्डर. And they know it. And they just don't have the guts. वो चाहे अरुणाचल प्रदेश पे स्टेटमेंट देता रहे कि आपने सेला टनल कैसे बना दिया, आपने ये सब कैसे कर दिया. लेट देम डू इट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट द फैक्ट इज अभी तक उनमें गट्स नहीं हुई है कि कोई ऐसी इंक्रोचमेंट करें या कुछ ऐसा वो एक्शन ले विच कैन एंडेंजर आवर सिक्योरिटी, बिकॉज दे रियलाइज द इंटेंट ऑफ द इंडियंस हैज चेंज्ड. And therefore, we have to keep this intent. But at the same time, as I said in the beginning, this is still a very sensitive time. It's a very precarious situation क्योंकि एक vulnerability factor है यहाँ पर. Vulnerability factor automatically हो जाता है कि जब चुनाव होते हैं उस समय आपके जो पूरी आपकी इलेक्शन मशीनरी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो सब लगे होते हैं इलेक्शन के अंदर और आपका पूरा ध्यान इलेक्शन पर केंद्रित होता है. एंड दैट्स अ परफेक्ट टाइम for a hostile force to seek a vulnerable point and attack. And this is what the government is aware of. उनको ये समझ है, they are very much equipped. And that is why we are finding that actually on a daily basis, literally by the hour, we are getting these defense updates on our achievements, on our capabilities. Because this is a messaging that is now going out loud and clear from the government कि भाई साहब, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा करा, वेदर इट्स इन द इंडियन ओशन या हिमालयन बॉर्डर पे या तो वेस्ट पे या आपने ईस्ट पे, कहीं पर भी कुछ उल्टा सीधा करा, वी आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेरी फर्मली. दिस इज अ न्यू, जैसे कहते हैं नया भारत है, ये हमारे नए रिस्पॉन्सेज हैं. एंड इट्स हाई टाइम that we gave these responses, which we are doing right now. That's the good news. We still have to be cautious. We still have to be very, very careful. जब ये समय बीत जाएगा, जब नई सरकार आ जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी, तो सिचुएशन ऑफ कोर्स विल चेंज अ लिटिल बिट, विल बिकम मच बेटर. मगर अभी राइट नाउ इट्स अ सेंसिटिव टाइम फॉर ऑल इंडियंस.
And so, on this note, I come to the end of this episode of the CAA show. I hope you really enjoyed this particular episode. You like our show. As I keep repeating again and again, press that red button on your screen, join us, and you will get completely different perspectives on the hot button issues of the day. And so, on this note, it's goodbye and cheers from my end.